दोस्तों, आर्मी चीफ साहब का वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान को कहा है कि आपको भूगोल और इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हो या नहीं, हमें साफ सुथरी चीज बता दो। और एक बड़े सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि आहिस्ता जिंदगी, जब मैं रिटायर्ड होने के बाद एक कैफे चलाऊंगा और उसमें मैं क्या करूंगा, समाज को मैं क्या देना चाहता हूं उसके ऊपर। उससे पहले जैसा हम सभी जानते हैं कि सेना के अंदर लगातार बदलाव हो रहे हैं। अब शीर्ष पदों के बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, जहां पर आपने सीडीएस साहब को देखा होगा, अनिल चौहान साहब की जगह आपने देखा होगा नए सीडीएस सुप्रीम रजावत। दूसरे आपने देखा होगा कि नेवी चीफ की घोषणा हो गई है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब भी अगले महीने विदाई लेंगे, तो उनकी जगह भी कोई बड़ा अधिकारी बैठेगा। लेकिन आखिर जाते जाते इन्होंने बड़ा कड़ा और सीधा संदेश दे दिया है। अब सीधा संदेश ये दिया है कि जनरल नरवाने साहब ने कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे खोलो। बातचीत करना, सौहार्दपूर्ण माहौल में रहना, यह ज्यादा अच्छी बात है और लड़ाई एक अंतिम विकल्प हो सकता है। इसके लिए उन्होंने क्या कहा, उसके बाद कहा, किसी ने पूछा आप रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे। उन्होंने कहा है मैं रिटायरमेंट के बाद अपने समाज को, अपने स्टेट को, अपने लोगों को कुछ वापस देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे इस शीर्ष पद तक पहुंचाया। देखिए कितनी अच्छी भावना होती है एक सैनिक की, और चाहे वो सिपाही हो चाहे वो जनरल हो। तो सबसे पहले तय कर लो कि तुम भूगोल या इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हो या नहीं। भारतीय सेना प्रमुख की पाकिस्तान को सीधी चेतावनी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी साहब ने शनिवार को पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए इस्लामाबाद को यह तय करना होगा कि भूगोल और इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हो नहीं। अगर आपने मुझे पहले सुना तो मैंने जो कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखता है, तो उसे तय करना होगा कि उसको कहां रहना है, जमीन पर रहना है या भूगोल में रहना है या इतिहास में रहना है। आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा किए गए हवाई हमले, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के ठीक एक सप्ताह बाद यह संदेश। पाकिस्तान बातचीत चाहता है। पाकिस्तान ने गुरुवार को भारतीय सेना के प्रमुख जनरल नरवाने द्वारा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता की टिप्पणी का समर्थन का स्वागत किया था, जिन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद की खिड़की हमेशा खुली रहनी चाहिए। ऑपरेशन 7 मई को सुबह हुआ था और 22 अप्रैल को घातक पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध का बदला था। उन्होंने सीधा सीधा कहा है, आप देख सकते हो, भारत के भीतर संवाद की मांग करने वाली आवाजें निश्चित रूप से सकारात्मक घटना है। हम आशा करते हैं कि भारत में समझदारी की जीत होगी। हम निश्चित रूप में देखेंगे भारत इन आवाजों पर कोई अधिकारित प्रतिक्रिया आती या नहीं। उन्होंने कहा है कि हो सकता है बातचीत की खिड़की खुली है, उस हो सके, लेकिन साथ में चेतावनी दी कि दुस्साहस मत करिए, यानी आतंकियों को पहुंचाओगे और हमें डिस्टर्ब करोगे तो फिर अब आखिरी परिणाम के लिए उन्होंने सीधा चेतावनी। अब दोस्तों उन्होंने बड़ी बात कही। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने मध्य प्रदेश में आहिस्ता जिंदगी नाम का एक अनूठे कैफे खोलने की योजना का खुलासा किया। उसका उद्देश्य चिंतन, सार्थक बातचीत और शांति स्थान प्रदान करना है। सौम्य है, सभ्य है, सुसंस्कृत है, मैं अपनी भाषा में कहूं। उन्होंने कहा है कि आहिस्ता जिंदगी नाम का एक कैफे चलाएंगे और वहां पर चर्चाएं होंगी, शांति होगी, सुकून होगा, सकारात्मकता होगी। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी साहब ने मध्य प्रदेश में आहिस्ता जिंदगी, क्योंकि वो मध्य प्रदेश रीवा के रहने वाले हैं। कैफे का उद्देश्य मैंने आपको बताया, सेवारत कर्मियों और नागरिक सदस्यों के मार्गदर्शन पर महत्व पर जोर दिया। इन्होंने कहा है सेना प्रमुख का उद्देश्य आदिवासी समुदाय के सदस्यों को अपने गांव से पलायन रोकने का योगदान देना। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि और कहा है कि जितने पूर्व सैनिक हैं उनको संगठित करके, यानी समाज में उनके दायित्व की बात कही। सेना प्रमुख का युवाओं और नेतृत्व के प्रति दृष्टिकोण, समाज को कुछ वापस देना चाहते हैं, मार्गदर्शन और सामुदायिक सहायता के लिए उन्होंने कहा है कि इस तरीके से हमारे प्रयास रहेंगे। और ये आप बातचीत के कुछ अंश आपके सामने। धन्यवाद। That physical fitness is kind of a bank, saving bank account. Because when you do the physical exercise, you have the emotional stability. You know how to take decisions under duress, under physical duress. And in our time, whenever you used to be under stress or having some slight cough and cold, we used to go for run and everything became all right. We never realized what has happened. But today you have to make choices. Whether you want to, if you're under stress, you want to take a heavy food, or you want to go through the reels, scan through the reels, or do the physical. My recommendation is go for the physical. And if you're fond of earphone, do use it. But always only put music, instrumental in that. So that the physical comes along with something called as meditation dhyana. So when you walk also, you're doing walking meditation. Remember in life that lot of issues which you are wanting the answer, if you do meditation while doing physical exercise, you'll always get the answer. Thank you. We have
Vice Admiral from DGFMS. To a major general till a general like me. That rhythm which is to be there, if you are able to ensure that rhythm is continuous in nature, going up and coming back, I think you have achieved your aim in self-actualization. But Maslow added some more term. Talked about the third term or level higher is self-transcendence. Self-transcendence, when you leave all this and then you look at the big picture, whole of nation approach. How are you going to converge this complete India as a nation to fight a war? How you're going to establish the interlinkages? How you're going to provide the strategic guidance to the decision makers? Those are the big things what we are looking at, while making sure that your halo effect and the reputation which you have made over a period of time comes down to a soldier or to a common citizen who is part of the whole of nation approach whenever you go for the next operations or war. So more than 4 decades, nearly 5 counting the training period and schooling as well in a military fashion, must have brought a lot of incidents where you felt a lot of joy, maybe a regret, not more. Would like to describe anything, sir, because the experience matters. Because I could ask you any other question as well, but I think any experience you want to narrate for joy and maybe one regret if you have. See, I think the father always feels happy when the small baby starts recognizing the father. Mother, of course, most of the time. But father, when he starts recognizing or she starts recognizing, I think father is the most happiest person. And I think that's what happens with a military leader. So as far as we are concerned, the military leaders, the joy comes when you join the unit for the first time. Everybody is apprehensive, how will this soldier, this officer would be. And when you come back from an operation and you find a flicker in the eye of the soldier that, look, I acknowledge you or I accept you. And he says, come, let's have meal together. When the soldier offers you food, I think that's the biggest joy you can ever have. The second thing is, when he has the blind trust on you, you have seen the Kargil operations and all that. Why a soldier walks into the hail of bullets when you know the bullets are coming from the other side? It's the trust on the leader. It is the faith on the camaraderie which is there, the team spirit which is there. I'll give you example, a peacetime example. Our unit was mobilized and sent 24 hours to camp somewhere for a testing purposes. And then after 24 hours was told, look, you people must be tired, so we'll give you 48 hours to carry out your annual inspection. Moment my commander used the word tired, I said, no, we are not tired, we are soldiers. We'll do it in 24 hours. And I came back to my unit, I said, look, this is the challenge I have given. The soldier said, once you have given this challenge, there's just no issue. For 48 hours they were awake, but they made sure when the commander came, everything was spick and span. So that is the kind of a joy which gives you. And this is the same thing when you carry out an operation and the soldier sits with you and hugs you. Look, we have been successful. There is no hierarchy that time. He considers you as your colleague, as your comrade. I think that is the biggest thing. As for the regrets are concerned, regrets will also be there, because in the 42 years, or if you start my uniform age from 9 years, there will be some regrets. But of course, you feel sad when your comrades leave you early because God decides to call them. When I was leading the operation, I lost my own company commander. The second issue is, soldier is always short of time, not in the unit, but talking to the near and dear ones, meeting them near and dear ones. In high altitude area, most of the time, soldiers have even missed their weddings. That has also been there. And even the birth of their child, etc. This is something which we have been working on, but it's beyond at times because whether God is supreme. So we work within that. But these regrets will always be there with us. But what is more important, a soldier joins together to celebrate the joy and also overcome the regret while they are in the team. So when you are in team, you just forget about everything. It's something like a doctor, when he is in the hospital, he loses a patient. But when he goes home, he picks up a baby, like, oh my God, that's a source of light, source of joy. That is how a soldier does it. He receives a phone, something has gone wrong. But moment he meets 3 peers, forget about it. Let's enjoy. So that is how the life is all about. That's military life, because unlike, and I will say this because I'm supposed to say what I want to say. You heard about 4 or 5 years ago, 6 years ago,
Some politician made a remark that, they're getting paid to die. They're getting paid for this, right? You must appreciate the humane angle of